मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ। मैं 18 वर्ष की थी जब मेरी शादी कर दी गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो दारू पीते थे, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो इस वजह से मेरी शादी जल्दी कर दी गई थी। मुझे कुछ नहीं पता था सेक्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, कुछ भी नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ, लाइक मेरे मेरे पीरियड मिस हो गए। उसके कुछ दिनों बाद मेरे ट्यूब में दर्द होना शुरू हो गया। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तब मैं डॉक्टर के पास भागी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने देखा कि जो मेरा बेबी था ना, वो ट्यूब में ग्रो हो रहा था। उससे क्या होता कि अगर मैं ध्यान नहीं देती और या मुझे पेन नहीं होता तो वो ट्यूब फट भी सकता था, लाइक मैं मर सकती थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका जो बेबी है वो ट्यूब में ग्रो हो रहा है, तो हम लोगों को उसको पुश करना होगा जिससे कि वो वूब में चला जाए। तो उन्होंने, वो एक प्रोसेस था बहुत बड़ा जिसमें मुझे बहुत पेन हुआ। उन्होंने वो सब किया जिससे उन्होंने मेरे बेबी को वूब में थ्रो कर दिया। एट लास्ट मैं खुश थी कि चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक बेबी आ रहा है, वॉज हैप्पी। बट लास्ट में मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उनको ये पसंद नहीं आया, और वो मुझसे 5 साल बड़े भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए और सब चीज़ें, तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मुझे हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ये समझ में आया है कि मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उनको सेक्स एजुकेशन दूँ, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताऊँ, उनको कंफर्टेबल करूँ कि मुझसे कुछ भी आकर पूछ सकें, क्योंकि एक औरत के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। I think the most successful aspect of my submitted media work is the fact that most of my B-roll was personal and shot by me. I also believe that the content of the interview was engaging as I drew out the intimate details with my questions. I focused on the lighting and I took away a lot of the post-production editing stress. The most problematic aspect was interviewing as well as taking the shots. This was a personal and a traumatizing topic, so I had to make sure that the interviewee felt as comfortable as possible and actually wanted to talk about it. I didn't want the interviewee to feel pressured into talking and therefore had to take a lot of reshoots. At the same time, I wanted to clearly capture the hand movements and emotions, and with the lack of much equipment, that was a difficult task. My Adobe Premiere Pro also crashed way too much during the most important week of the semester, and that was not easy to deal with. Ravage's dramatic development time and story article pushed me in terms of the creative possibilities with my video. I found the 3-act structure he talked about for interviews really interesting because it makes a good flow, but it was hard to follow. Using Ravage's article, I found it more appealing to do this interview section based on a more narrative style of storytelling, as it really brought out the interviewee's emotions on the screen. The text emphasized the interviewer's ability to capture the moments, and my mother isn't usually so expressive. Vox Pops I talked about in the last vlog, which is more of an improvisational style of an interview as opposed to a stage interview, can really depict, as it's mentioned in the text, thesis or antithesis of emotions. I gained a lot of knowledge from this particular assignment. A core lesson for me was to create a comfortable setting for the interviewee. Understanding how my interviewee will respond to certain questions was vital. I learned how to cut out information and still create an interview that flows naturally while at the same time building and reflecting emotion. Lighting is so important when it comes to creating a particular energy and vibe. It also takes away most of the stress of post-production editing, especially when it comes to color grading. I was struggling on how to get the perfect shots while at the same time asking engaging questions, considering the continuous information provided by the interviewee. I had to reshoot because of this, as I couldn't do both at the same time. As once the shot is done, there are limitations to what you can and cannot change. Just like everything else, planning and organizational skills really came in handy.